In the presence of a source charge capital Q at point O, हमने डिफाइन किया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज स्मॉल q at a point P को वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स F external से. So potential energy of test charge Q at P is the work done in bringing this charge from infinity to a point P. And we also talked about, to make it more meaningful, हमने एक दूसरा पॉइंट R भी लिया था जिसके हेल्प से हमने वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स को डिफाइन किया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से. And this change in potential energy is actually potential at point P minus potential at point R. यहां पे displacement between P and R जो है वो displacement है आपका small r. It is a vector quantity. So work done is equal to change in potential energy. लेकिन potential is different from potential energy. So let us know what is potential or electrostatic potential. And the definition of potential is work done by external force in bringing a unit positive charge from point R to point P. So definition के according आपको जो Q लेना है, जो टेस्ट चार्ज लेना है, it should be a unit charge. So उसका जो वैल्यू होगा that value is 1. हमने पहले बात की थी जो एक्सटर्नल फोर्स है आपका, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो कि जो हमारा सोर्स चार्ज है Q के कारण जनरेट होता है ऑन चार्ज स्मॉल q टेस्ट चार्ज पे. सो F एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू Q दैट इज द टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड वी ऑल्सो नो दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द सोर्स चार्ज कैपिटल Q. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर हमने टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया देन वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक उसी तरह अगर हमने वर्क डन दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यूनिट चार्ज से डिवाइड किया तो जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल. एंड फाइनली वी कैन से पोटेंशियल इज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट इज U at P minus U at R divided by the test charge. And we can write it equal to V at P, that is potential at P, minus potential at R. And these V at P and V at R are the potentials or electrostatic potentials. The unit of electrostatic potential is volt, which is equivalent to joule per coulomb, as we can see from this formula, because electrostatic potential is actually work done divided by the test charge.